Question number 7. Define potential difference. So it is work done in passing charge across a component. It is called the potential difference. Okay, state the equation which defines EMF or electromotive force. So EMF की equation होती है EMF or voltage is work done per unit charge, W upon Q. The EMF of a battery is 9 volts. The battery is in a circuit. Calculate the work done by the battery when it moves a charge of 30 coulombs around a complete circuit. So अभी हमने फॉर्मूला लिखा था EMF is work done upon charge. Work done हमें कैलकुलेट करना है. So EMF multiplied by charge. EMF is 9.0 and the charge is 30. So answer is 270 joules. So work done will be 270 joules here. Next part. A circuit consists of a DC power supply, a lamp, and a thermistor. Draw a circuit diagram of these components connected in series. Okay. सबसे पहले DC पावर सप्लाई का सिंबल हम बना लेंगे और DC पावर सप्लाई इस तरह एक पॉजिटिव और नेगेटिव उससे शो हो जाती है टर्मिनल से. फिर इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट एक लैंप शो कर देते हैं. फिर उसके बाद हम एक थर्मिस्टर शो करेंगे. थर्मिस्टर के लिए सिंबल इस तरह का बनता है. तो इस तरह हमने तीनों कंपोनेंट्स को सर्किट में शो कर दिया एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. Explain what happens in the circuit you have drawn in previous part when the temperature of the thermistor is increased. अच्छा जी, जब थर्मिस्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मिस्टर की नेचर ये होती है कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब होगा कि ये जो सीरीज सर्किट में कनेक्टेड था इसका वोल्टेज शेयर कम हो जाएगा. तो आपने यहाँ पे ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, एज अ रिजल्ट इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई और सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो इसका वोल्टेज शेयर कम हो जाएगा. इसके वोल्टेज शेयर के कम होने से लैंप का वोल्टेज शेयर इंक्रीज होगा और लैंप का जब वोल्टेज शेयर इंक्रीज होगा तो लैंप की जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें यही आंसर यहाँ पे लिखना है. द रेजिस्टेंस of the thermistor decreases and so does its voltage share, and the voltage share of lamp increases, which increases its brightness. So lamp would be glowing more bright or working with more brightness than it was previously.